जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो उस वक्त मैंने पंजाबी ऑप्ट की थी इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि पंजाबी जब मैं पढ़ूंगी ना तो बाकी स्ट्रेस मेरा उतर जाएगा और मैं बहुत इन्जॉय करूँगी, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जब मैं पंजाबी की क्लास ले रही थी तो थोड़ा सी मेरी कॉन्वर्सेशन मेरी फ्रेंड के साथ जो थी प्राइवेट वाली, वो पब्लिक हो गई। तो बाकी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये हमें पढ़ने नहीं दे रही, ये नहीं करने दे रही, ये नहीं कर रही। सर तक जो है खबर पहुंच गई और सर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। ही रिमूव्ड मी फ्रॉम दैट ग्रुप। और उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अब तो मैं इनको CSS करके दिखाऊंगी और मैं फिर इनको क्रेडिट भी नहीं दूँ। लेकिन जब मेरा क्लियर हो गया तब मुझे सबसे पहले सिर्फ सर का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं पेपर अटैम्प्ट कर रही होती थी, जब मैं पढ़ रही होती थी, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही होती थी और वो सर की होती थी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना है, ये नहीं हो। तो अल्लाह के बाद, मेरे पेरेंट्स के बाद ओनली पर्सन जिसको सारा का सारा क्रेडिट जाता है ही सर तैमूर। थैंक यू सो मच सर, यू आर अ गेम चेंजर इन माई लाइफ, यू आर माई गार्डियन एंजल। थैंक यू Sir, my journey was very brief because I had only 6 months to prepare for, और मेरी इस जर्नी में जो है सिर्फ सर तैमूर से ही गाइडेंस ली। और बेहतर ये हुआ कि मैं जिस तरह मैडम ने भी कहा, डॉक्टर सबा ने, कि ही इज़ अ मैजिशियन, आई कॉल हिम द बाइबल। तो आप इनको फॉलो करें और आप यू वुड लैंड इन अ वेरी ऑसम ग्रुप। लाइक आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको कहीं पे दूसरी एकेडमीज़ या उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आप अपना एक मेंटोर चूज़ करें और यू विल लैंड इन अ वेरी गुड ग्रुप। Sir, once again, I would like to thank you on behalf of my colleagues as well. Thank you so much, sir. I am Junaid Aftab and I got 11th position as Afsal told. तो मैं थोड़ा सा इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा लंबा था। जैसे मैं उसको अगर जनाक ये कोर्स से स्टार्ट करूँ, थिंक 100 times बिफोर टेक अ डिसीजन, बट वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन स्टैंड इट लाइक अ मैन। तो मैंने भी ये डिसीजन लिया आफ्टर माई इंजीनियरिंग के मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। तो आई अपीयर्ड इन PMS thrice, आई क्वालिफाइड इट thrice, but I couldn't get the allocation. Then I appeared in CSS thrice और लास्ट टाइम द लास्ट अटैम्प्ट आई aced it. और उसमें सर का बहुत ज़्यादा रोल रहा। दोज वर द कोविड टाइम, सर के पास आना और सर ने हमेशा मोटिवेट किया कि इट्स नेवर टू लेट, इस दफ़ा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट एक्चुअली एंडेड इन इन द 11th पोजीशन एंड इन द PS ग्रुप, जो एक ड्रीम के तौर पे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होता है, जो भी एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है व्हेन इट कम्स टू CSS, कि मैंने इस ग्रुप में जाना है, इट्स टॉप ग्रुप में जाना है। तो सारे ग्रुप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक ड्रीम था, वो अचीव हुआ। तो इसमें सर का रोल था और रीड राइट का बहुत रोल रहा। तो थैंक यू एवरीवन। कुछ लव्स थे जो मैंने सर को मैसेज किया था, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। यू आर अ लाइट हाउस टू द लॉस्ट शिप्स, यू आर अ लाइफ गार्ड हु रेस्क्यूज ड्राउनिंग पीपल, you are the hope in the times of great depression, you are the comfort to the most discomforted, you are the most beautiful view after a long tiring journey, and you are the sunrise after the darkest night. You were my sunrise, sir. When I had lost hope and I passed through my darkest night, you were the sunrise. और एक और बात जो मैंने सर को कही थी, it is कि सर तैमूर as a civil servant and Sir Taimoor as an army officer and Sir Taimoor as a police officer would have been just another story, but you as a mentor would go down in the history. Thank you, sir. Okay, sir, we would like to thank you for all your efforts. For जैसे किसी ने यहाँ पर कहा कि sir have been very kind to us in his words. I believe that's the softest word you've used. लेकिन sir, I would like to appreciate your efforts for all the time we've called you, may it be 3 in the morning or even in the afternoon. You've been there for all of us, and I would like to keep it limited. लेकिन sir, thank you so much, and I would like to say जितना भी हम आज कर सकें, I think that'll be limited for what you've been doing for us. Thank you so much, sir. One of my teachers guided me कि मुझे सर तैमूर के पास जाना चाहिए. I came to him, and this man is a magician. He actually is, and I mean it when I say that. The reason ये कहने की वजह ये है कि जितनी इज़्ज़त अफजाई होती है, it keeps us pushing. सर ने अभी बात की पैशन की, तो जब हम मॉक्स देते हैं ना, जितनी मिस्टेक्स होती थी उतने ही पैशनेट हम होते थे दोबारा से कि लेट्स गो थ्रू इट अगैन, कोई लूप होल है तो उसको कवर कर लें. सेकेंडली, आफ्टर अल्लाह ऑलमाइटी, द ड्राइविंग फोर्स हैज़ बिन माई फादर.
Alhamdulillah, I'm allocated in a group where my father has served approximately 35 years, and the whole honor and the respect goes to him. And it was a surprise. The whole family, that two of us got allocated in the same group, in the same common. So I'm thankful to Allah Almighty. He has been very, very kind to us. After him, I'm thankful to my father, my parents, who have been such a driving force to make us through. We are 4 sisters and 1 brother. Out of them, 3 of us are doctors, and 2 of us are allocated. And last but not the least, I'm really thankful to Sir Taimoor Bukhari for making this happen, and thank you so much. Sir Taimoor has played a huge role, and he has done things that very few people do. और मैं इसकी एक मिसाल छोटी सी दे के अपनी बात मुख्तसर करना चाहूँगा कि when I was in 9th 10th class, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक पैदा हुआ 9th 10th में. उससे पहले मैं पढ़ने में कोई इतना ज़्यादा नहीं था. When I started studying, तो I wanted to be a speaker. तो 10th क्लास में एक एनुअल इवेंट होता था हमारा, छोटा सा कप प्राइजेस का एम्बेसडर आते होते थे. तो मैंने उनको कहा कि सर मैंने वो करना है, and I was very passionate, and there was a professor that has a different intention, and he wrote in written कि Abdullah has a twist in his tongue and he cannot utter the words rightly. So I was out from the debating club from those opportunities. और 2 दिन पहले I just got a call from Sir Taimoor कि अब्दुल्ला हमारा annual dinner हो रहा है और तुम इसमें comparing कर लेना. It was something कि ठीक है सर मैं कर लूँगा. I was in different things और मैं travel कर रहा था. I came here. लेकिन the moment I entered into the governor house, I realized that thing. That was a time I was shattered because I could not speak. But this is the moment that is happening, that I'm talking to the most prestigious group of people in the country at one of the most prestigious places. So thank you, sir, for giving me even this opportunity to explore this side of my personality and grow further. Thank you, everyone. मेरी जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी तो उसके बाद मैं आ गया था लाहौर में. आई वॉज इन ऑनलाइन बैच, ऑगस्ट बैच. तो जैसे ही मैं लाहौर आया सर के पास, इवन रिटन की तैयारी मैंने सर तैमूर बुखारी साहब के पास की थी. एंड आफ्टर रिटन जब इंटरव्यूज़ हुए थे, देन अगेन सिर्फ सर के पास आया था. मैं कभी रिटन सर तैमूर ने पास करवाया तो इंटरव्यू भी सर ही करवाएंगे. सो मॉक्स के लिए ये वो आई हैव नेवर बिन टू एनी अदर अकेडमी. तो यही मेरी ब्रीफ सी जर्नी है 22-23 ईयर्स में. आई डोंट थिंक दिस इज़ दैट बिग अचीवमेंट. आई एम जस्ट एन ASP जैसे मेरे 22 अदर ASPs हैं. आई एम लाइक देम, आई एम नॉट डिफरेंट. या एक एक्सेप्शनल केस ज़रूर है कि हिस्ट्री में कभी कोई ASP नहीं बना. फॉर यू पीपल इट मे बी डिफरेंट, बट फॉर अस वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तान, एंड दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.